हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ timesglo पॉडकास्ट। आज जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया, शी इज़ आयशा मुगल। शी हैज़ वर्क विद मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स। आजकल शी इज़ डूइंग हर PhD फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आयशा। Thank you so much, Faisal, for having me. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग? देखें, वो कहते हैं कि PhD स्टूडेंट से ये पूछना नहीं चाहिए कि उसकी स्टडीज कैसी जा रही हैं। बट इट्स गोइंग वेल। बस पहले साल के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। So it's getting intense day by day. प्रोग्राम, It's a राइट? 3 years program. अच्छा, 3 years प्रोग्राम। किस चीज़ में आप कर रही हैं? लाइक व्हाट्स मेरा योर जो डिपार्टमेंट स्पेशलाइजेशन? है यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क में, आई एम इन द स्कूल ऑफ बिजनेस और उसमें मैं PhD कर रही हूँ। All right. So before we go into जो हमने डिस्कशन करनी है, मैं ये जानना चाहूँगा कि how was your journey, like you are a trans woman, और आपका पाकिस्तान में बहुत मुश्किल होता है as far as I know कि being a trans, और यहाँ पे पाकिस्तान में सरवाइव ही करना मुश्किल होता है। और आपने इतना कुछ अकम्प्लिश किया, यू हैव वर्क विद द UN and now you're pursuing your PhD degree. So how was your journey like? फैसल जर्नी एक ट्रांस की, आई थिंक ट्रांस वुमेन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, द जर्नी इज डिफिकल्ट, स्पेशली चाइल्डहुड एंड टीनेज का टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, and especially in Pakistan. And at that time, when I was in school and college, there was no trans rights awareness. Although we have the visible Khwajasara community and culture before the inception of Pakistan in our region, लेकिन ख्वाजा सराओं को हमने एक prominent mainstream professions में नहीं देखा था. So at the time when I was in school and college and university, there was there was a lot of stigma, or I was always bullied in my school and college because of my femininity. I was always feminine. I was always, I ended up becoming a laughing stock. So it was difficult. और उस टाइम पे, because जैसे मैंने कहा कि इतनी ज़्यादा visibility नहीं थी, कोई trans heroes नहीं थे पाकिस्तान में, जैसे आज हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा trans heroes हैं, activists हैं, उस टाइम पे नहीं था. So I did not have any reference point. So it was very difficult, intense. Um, but I'm glad that I completed my education, and I did not have to, I did not have to beg or perform dances in the weddings, जो कि typical हमने associate कर दिए हैं professions with the Khwaja community. So उस लिहाज से I was privileged, and so I got the opportunity to complete my education despite of all the bullying and discrimination. And because of that, I was able to teach in different universities in Pakistan. I worked with Ministry of Human Rights. I worked with National Commission for Human Rights. Or so I think that was the best part of my life when I started working. And मैंने जब अपना career का आगाज किया as an activist, as a researcher, that helped me a lot to raise awareness as well as personal satisfaction के लिए भी, और personal growth, career growth के लिए भी, that was important. और हाउ योर फैमिली लाइक? आप वैसे नॉर्मली तो ये होता है कि ट्रांस जो होती हैं उनको घर से निकाल दिया जाता है एंड दे हैव टू लिव विद देयर ओन कम्युनिटी। सो आपकी फैमिली वाज दैट सपोर्टिव? See, I'll be very honest. In the beginning, they were not supportive because my parents also were afraid that I will end up begging on the roads. And जैसे मैंने कहा कि उस time पे, when I was young, I mean I'm still young, but when I was in school, उस time पे, and I remember my parents, my mother, she passed away last year. Again, they were always concerned about my femininity, and they always wanted me to succumb to the norm and to live like a boy. But I was never a boy. I was always feminine, and I was always bullied in my in my family, in the extended family, in the neighborhood. Everybody knew that I am
a boy apparently, but I am feminine. And we all know that boys who are feminine in our societies, they have a miserable childhood, they have a miserable life because they are being bullied and harassed everywhere, So inside the you went family, outside the family, to bullying school and certainly college as a exists. boy. Sorry, come again? You went to school and college as a boy. Yes, I was socialized as a boy. ठीक है, जितनी भी अच्छा. हमारी ख्वाजा सरा हैं, ट्रांस वुमेन हैं, शुरू से ही हमारी सोशलाइजेशन एज अ बॉय होती है। हमें लड़कों की तरह पहनना, जो तमाम जेंडर एक्सप्रेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, द वे वी ड्रेस अप, द वे वी यू नो we have to perform our gender in society. So we are trained to perform the gender as a masculine gender. But because वो एक innate जो हमारी gender identity है, that is feminine. So that femininity makes us different from a cisgender man. जैसे आप अपने आप को मर्द आइडेंटिफाई करते हैं, और ज्यादातर जो लोग हैं जो मर्द हैं वो बचपन से ही मर्द होते हैं ना, वो फेमिनिन तो नहीं होते। तो और उनको उसी तरह से हमारा माशरा एक जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर है उसको उसका रोल प्ले करता है। हमारे जो अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर्स हैं सोसाइटी के अंदर, मर्द औरत को वो प्रेशराइज करते हैं कि दे हैव टू परफॉर्म इन अ सर्टेन वे, वुमेन हैव टू बी फेमिनिन, मेन हैव टू परफॉर्म जेंडर इन अ मस्कुलिन मैनर। इसी तरीके से जो ख्वाजा सरा हैं, तो हम जब छोटी होती हैं तो हमें भी माशरा ट्रेन करता है कि हमें एक लड़के की तरह ही परफॉर्म करना है, हमने लड़कों की तरह स्पोर्ट्स खेलनी है, क्रिकेट, फुटबॉल। So I was also, socialized as a boy. I was supposed to go and play with boys, to play cricket and play football. But I was very feminine. So femininity की वजह से I did not have that um, body gestures and postures. So I always used to stand out. अगर मैं फुटबॉल के ग्राउंड में भी गई हूँ खेलने के लिए, तो सबने नोटिस कर लेना कि ये जो है, दिस गाय इज फेमिनिन, ही इज नॉट अ कंप्लीट बॉय, जो एक मस्कुलिनिटी की डेफिनेशन पे कभी पूरी नहीं उतरी। तो यही वजह होती है कि ट्रांस का जो बचपन होता है वो हर तरफ से बुलिंग होता है, कि हम स्कूल में भी या प्ले ग्राउंड्स में या मोहल्लों में, we do not fit into the boxes of masculinity and femininity. And if we talk about trans women, so we do not fit in that criteria of masculinity because of our internal femininity. तो हाँ, so कहने को you can say that I was socialized as a boy since childhood, but What did you used to feel back then? Like क्या दिल क्या करता था? I wanted to live like a woman. I always thought बचपन से कि I'm a girl, and I wanted to play with my female friends, मेरे मोहल्ले में, मेरे स्कूल में, मेरी cousins के साथ बैठ के, जो लड़कियां करती हैं हमारी सोसाइटी में, कि मेहंदी लगा लेना, चूड़ियां पहन लेना, स्पेशली व्हेन वी हैव दीज फेस्टिवल्स, जहाँ पर हमारे जो ईद के फेस्टिवल्स हैं, हमारे चूड़ियों के स्टॉल्स लगते हैं। So as a child, I always remember, I always wanted to wear chudis. I wanted to get the mehendi done on my hands. I wanted to wear the feminine dresses. I wanted to wear the beautiful frocks or lehenge or वो सब चीजें. But I wasn't allowed by my parents to wear that because, as I said, I was conditioned. I was socialized as a boy, so I was forced to wear masculine clothes. I was forced to play masculine games. I was forced to do the masculine activities that are expected from the uh, male children in our society. So that was the reason of I mean, I wasn't comfortable with that because that was not me. Because as far as I remember, the moment I uh, uh, was a sensible child, I always associated myself with femininity, and I always identified myself as a woman. I mean, not openly, but internally आपको पता चल जाता है ना, आप जब when you are growing up, तो हम एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं अपने आप को। हर बच्चा अपने आप को या तो मस्कुलिनिटी के साथ या फेमिनिनिटी के साथ एसोसिएट करता है। तो आई वाज ऑलवेज फेमिनिन। जैसे अगर उर्दू में एक ले लैंग्वेज बोलो, जो कहते थे कि जनाना बच्चा, आई वाज ऑलवेज जनाना, आई वाज ऑलवेज फेमिनिन। तो यही बात पूरे खानदान में फैमिली में कहती कि ये जो है ये लड़कियों की तरह है, ये लड़कियों की तरह बोलता है, लड़कियों की तरह चलता है।
तो आप इमेजिन करें कि उस टाइम पे कितना प्रेशर होता होगा, इवन ऑन माय पेरेंट्स, कि उनको भी इतनी एम्बैरेसमेंट होती थी अपने बहन भाइयों के सामने, एंड दे वर आल्सो वो जो that again I will refer to the accountability structures that we have in our society. अब इसमें डिफरेंट थ्योरीज भी हैं, जैसे वेस्टर्न जिमरमैन की भी डूइंग जेंडर थ्योरी है कि हमारी सोसाइटीज की जो अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर है, दे फोर्स अस टू व्यू जेंडर इन अ certain way. So हम्म that those these accountability structures make the life of trans child miserable, as well as it also makes the lives of our parents miserable, because they are also under constant interrogation. Okay, why your child is not man enough? अच्छा, ये आयशा, सिंस यू आर अ रिसर्चर योरसेल्फ, और अगर हम थोड़ा सा इफ वी गो बैक टू द हिस्ट्री, और इफ वी टेक अ लुक एट द प्री कॉलोनियल इंडिया, जिसमें यहाँ पे डिफरेंट जो सोसाइटीज थी, वो डिफरेंट रिलीजन के लोग, डिफरेंट जेंडर्स के लोग वर को एग्जिस्टिंग। सो जैसा कि हमने सुना, एंड वी हैव रेड इट इन आवर टेक्स्ट बुक्स के, जो ट्रांस होते थे वो दे हैव अ स्पेशल रोल इन द मुगल कोर्ट, स्पेशली कि मुगल में उनको एक मुगल कोर्ट में उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता था। हम्म, सो हाउ डिड लाइक पाकिस्तान में, अब उसके बाद फिर कॉलोनी आई, कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश आए। सो हम्म, ब्रिटिश ने क्या किया स्पेसिफिकली ट्रांस के साथ, के उनको जो है वो एक समझ लें कि सोसाइटी के साथ से अलग कर दिया गया। जी। फैसल, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि आपको याद होगा कि आपने फर्स्ट टाइम ख्वाजा सरा कब देखे होंगे, किस उम्र में देखे होंगे अपने इर्द गिर्द पाकिस्तान में? मैं आई वाज अराउंड 10-15, मैंने तब भी देखे होंगे जो दे वर बेगिंग। ठीक है। वो और उनको आपने देख, अपने अगर आपने अपने वालिदैन से या आपने अपने दादा दादी से पूछा होगा, तो उनके लिए या कोई एलियन कॉन्सेप्ट था, या उनको पता था कि ख्वाजा सरा होते हैं पाकिस्तान में, आपके दादा या परदादा, अगर आपका कभी उनसे बात हुई और हो जिस कि तरह होते हैं वो तो ये कहते थे कि होते हैं, ये वो ये क्या यूज करते थे कि ये बेचारे हैं, लाइक दे वर। और हमारे, मैं बचपन में ये देखता था कि एक ख्वाजा सरा थी जो कि आया करती थी हमारे गांव में, और वो हम्म, इसलिए आती थी, कोई कहीं पे कोई बच्चा पैदा होता था ना, तो वो हम्म, उसकी जो पहली पहली जो रसूमात होती हैं बच्चे जी की, बिल्कुल। उसके बधाई लिए वो आया बधाई लेने करते थे। आते हैं जब बच्चे। जी। हाँ, तो वो उसके लिए आया करती थी, और हमारे माशरे में बड़ी रिस्पेक्ट थी उनकी। ठीक है, तो एज ए सोशल साइंटिस्ट अगर आप ये देखें कि आपके घरों में, फैमिलीज में ख्वाजा सराओं का आना कोई मायूब बात समझी नहीं जाती थी। नहीं, नहीं इट वाज नॉट एन एलियन कॉन्सेप्ट, कि कोई वेस्टर्नाइज चीज नहीं है। हमारे आपके दादा, मेरे दादा, हम उनके वालदैन, generations हमारी, they have always accepted ख्वाजा सरा कि this is the part of our culture. तो ख्वाजा सरा कल्चर, अगर एकेडमिकली हम बात करें इस पे, जो हमारे जेंडर जेंडर स्कॉलर्स हैं हमारे पाकिस्तान के भी और इंटरनेशनली, उन्होंने इतने रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं, ऑलमोस्ट 3000 years ओल्ड कल्चर है ख्वाजा सरा कल्चर, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, हमारे इस खित्ते में हमेशा रहा है। So there was always this visibility. और जो हम हमारी जनरेशन है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, आपके पेरेंट्स, मेरी फैमिली से, उनके उनके बुजुर्ग, दे ऑलवेज दे ऑलवेज न्यू कि ख्वाजा सरा आर पार्ट ऑफ अस, पार्ट ऑफ दिस लैंड। तो हम्म ब्रिटिशर्स केम, दे ब्रॉट दिस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1870 का, और ये वेस्टर्न जो कॉलोनियल माइंडसेट है, उसने आके उनको समझ नहीं आया कि व्हाट इज ख्वाजा सरा। सो वो ये लेकर आए, एक्ट लेकर आए, एंड दैट इज व्हेन द मार्जिनलाइजेशन स्टार्टेड। सो आज जब हम ये डिबेट्स देखते हैं, और वेस्ट में भी इंटरनेशनली हर जगह एंटी ट्रांस डिबेट्स भी हो रही हैं, और अब पाकिस्तान में जो कुछ लोग और कुछ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जो ये ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट दोबारा लेके आना चाह रहे हैं, तो वो अब हमें कहते हैं कि ट्रांस जो है वो एक वेस्टर्न आइडियोलॉजी है। हालांकि दे आर सो रॉन्ग एकेडमिकली भी, और अगर आप हिस्ट्री में देखें, 3000 year ओल्ड ख्वाजा सरा कम्युनिटी है इसी खित्ते के साथ, और हमारी सोसाइटी have always tolerated and accepted gender diversity. So ख्वाजा सरा have rich history, rich presence, जैसे आपने भी कहा कि वो मुगल कोर्ट में उनका important रोल था, पॉलिटिक्स में उनका important रोल था। they were, अगर मैं आज की जुबान में कहूँ कि दे वर द एचआर एग्जीक्यूटिव ऑफ हरम, जो हरम का जो एक सिस्टम था मुगल रूल के अंदर, उसमें तो एचआर एग्जीक्यूटिव्स जो थे वो ख्वाजा सरा थे, ट्रांस थे। सो
Khwaja always had, and still till date, we have a very strong presence in our region. और तभी तो मैं खुद बरतानिया में बैठी हुई हूँ और मैं यहाँ की यही बात कर रही होती हूँ कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कल्चर दैट आई कम फ्रॉम पाकिस्तान. आई एम वेरी प्राउड पाकिस्तानी एंड वेरी प्राउड ख्वाजा कि आर रीजन, माई रीजन हैज एक्सेप्टेड दिस जेंडर डाइवर्सिटी 3,000 साल से. ठीक है. तो so I think ये जो हमारा historical richness है, we need to realize this, and this is not a Western propaganda, बल्कि अभी जितने भी एंटी ट्रांस मूवमेंट पाकिस्तान में चल रही हैं, they are basically trying to bring this British colonial mindset in Pakistan again. ये जो वेस्ट की टर्फ मूवमेंट है फेमिनिज्म के अंदर, पाकिस्तान में नहीं है. पाकिस्तान में फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट और ट्रांस वुमेन ख्वाजा दे सपोर्ट ईच अदर. पाकिस्तान में जो हमारी फेमिनिस्ट मूवमेंट भी है, दैट इज नॉट टर्फ. ये टर्फ मूवमेंट जो ट्रांस एक्सक्लूसिव फेमिनिज्म की जो रेडिकल फेमिनिज्म है, ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है. हमारे खत्ते में ख्वाजा हमेशा घरों में आते रहे. जैसे आपने भी कहा कि आप घर में आते थे, तो हमारे जो घरों की जो औरतें हैं वो हमेशा बहुत कंफर्टेबल रही हैं ख्वाजा सराओं के साथ. एंड इन आवर कंट्री वी डोंट हैव एनी केस ऑफ हैरेसमेंट जहां पर कभी ऐसा हुआ हो कि किसी ख्वाजा सरा ने किसी औरत को हरास किया हो. तो I've द never ब्यूटी ऑफ heard आवर of it. कल्चर. या सो अच्छा, लेकिन इस चीज को ये भी मलाइन किया जाता है कि ये जो है एलजीबीटी क्यू को सपोर्ट कर रहे हैं, एलजीबीटी क्यू का एजेंडा है जो कि ये यहाँ पे लाना चाहते हैं. जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे काफ़ी कुछ राइट विंग के लोग हैं, दे हैव देयर प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया, और वो लोगों को कह रहे होते हैं कि कोई भी अगर ख्वाजा सरा जो है वो मेरी जो घर में बहन या उनके वॉशरूम आएगा तो मैं उसको चीर दूंगा. सो हाँ, इस तरह का जो माइंड सेट है, अगर देखें ऑलरेडी हमारी एक सोसाइटी जो है वो काफी हद तक वायलेंट हो चुकी है. और अगर ये अब आप देखें कि बहुत सारे ख्वाजा सराओं को इन पाकिस्तान मार दिया जाता है, लाइक बिल्कुल. किलिंग की केसेस आपने तो देखे होंगे, बिकॉज यू हैव बीन हियर इन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स. सो ये जो माइंड सेट है, हाउ दे आर, किस तरह का, ये कौन लोग हैं बेसिकली, मैं ये दरअसल आपसे ये वो लोग हैं जो बहुत नाइव हैं, जो किताब से और रिसर्च से जिनका ताल्लुक नहीं है, जिन्होंने ख्वाजा सराओं की जिंदगी पे कभी एथनोग्राफिक स्टडी नहीं की हुई. कि आप कभी ख्वाजा सराओं के साथ जाके उनके डेरों पे बैठें, उनके साथ खाना खाएं. दिस इज व्हाट एन एथनोग्राफिक रिसर्चर वुड डू, अ सोशल साइंटिस्ट वुड डू. आप बस लैपटॉप पे बैठ के जो वेस्ट की चीजें चल रही हैं और वेस्ट की कुछ जो वहाँ की जो राइट विंग है वेस्ट की, उसको बस आप कॉपी पेस्ट करते हैं, वहां से कॉपी किया और आपने विदाउट एनी क्रिएटिविटी आपने यहाँ पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं. सो आई वांट देम टू गो बैक टू स्कूल और वो जरा अपने आप को अपने एक तो हिस्ट्री देखें, पढ़ें और जेंडर एंड सेक्सुअलिटी में फर्क करें. जो सेक्सुअलिटी का मामला है, लेस्बियन और गे जो है उनका मामला सेक्सुअलिटी का है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन का है. अब सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो आपकी किसी इंसान की तरफ रोमांटिक एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन है. ठीक है. तो जो सेक्सुअलिटी है वो तो एक बहुत पर्सनल मैटर है ना. वो तो आप अपने बेडरूम में क्या कर रहे हैं वो तो मैं तो आके नहीं देखूंगी. ठीक है. कोई क्या अपने बेडरूम में कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, दैट इज नॉट माई कंसर्न. वो जो हम एक जो शर्म और लिहाज का भी ताल्लुक है चादर और चार दीवारी का हमारे माशरे में. तो जो लेस्बियन है और गे हैं वो तो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान में. लेस्बियन कपल्स भी हैं, गे कपल्स भी हैं. दे डोंट नीड द ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी टू सेलिब्रेट देयर सेक्सुअलिटी. तो सेक्सुअलिटी और जेंडर आइडेंटिटी ये दे आर टू डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स. एकेडमिकली भी आप देखें तो दे आर टू डिफरेंट रिसर्च एरियाज. ठीक है. तो पाकिस्तान में मुझे बताएं कि आप कितने आपने देखा है कि जो राइट विंग मूवमेंट है ये जो अपने टॉक शोज करते हैं या ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करते हैं या पॉडकास्ट करते हैं, हैव यू एवर सीन एनी पीएचडी जेंडर स्टडीज in them? Have you seen any doctor या gender scholar who has years of experience working with transgender and intersex people? No.
So I think it's high time that media should, realize that you need to bring experts of that topic who have spent their lives dealing with trans and so sexuality is a very different matter. Lesbian gays का issue उनका मामला is very different. ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सरा का मामला शनाख्त का है, आइडेंटिटी का है, जेंडर एक्सप्रेशन का है. सो इफ आई जैसे मैंने आपको बताया कि एज अ चाइल्ड आई वाज ऑलवेज फेमिनिन एंड विद द रेफरेंस वी आर हैविंग दिस interview with the reference of Dr. Anis Salman, who was my mentor and who was my professor in ComStats University when I was doing my masters there. तो ये इतनी पुरानी बात है. तो उस टाइम भी आप उनसे पूछें, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे टीचर्स स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, या मेरे जो क्लास फेलोज हैं, they will tell you that I was always feminine. Even if I was wearing a masculine cloth, I was always feminine. So my struggle was to live my life with honesty. I wanted to be true to myself. I did not want to live a fake life. तो मैं अब इतने सालों से when I have socially transition किया and I came out as a Khwaja Sarayan trans woman, so I'm living my life as a woman, you know. तो sexuality was not the matter. अगर sexuality का मामला होता तो वो तो आपने अगर किसी के साथ आपके आपके रोमांटिक या सेक्सुअल रिलेशंस हैं, वो तो आप एज अ बॉय भी रख सकते हैं. और गेज जो हैं और या लेस्बियन हैं, उनका जेंडर का मसला नहीं होता. दे डोंट वांट टू चेंज देयर जेंडर, दे डोंट वांट टू चेंज देयर जेंडर एक्सप्रेशन. दे आर वेरी हैप्पी. लेस्बियंस आर वेरी हैप्पी लिविंग एज अ वुमन. गेज आर वेरी हैप्पी लिविंग एज अ बॉय. ठीक है, उनको गेज जो है वो बॉडी बिल्डिंग भी करेंगे, उनको अपनी जो मस्कुलिनिटी, जो उनका मस्कुलिन जेंडर एक्सप्रेशन है वो करेंगे. तो वो उनका तो मामला ही नहीं है, वो तो मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान में. मसला तो ख्वाजा सराओं का है. तो हमारी तो बेसिक जो है, क्या कहते हैं, हम मेरी गुरु कहा करते हैं कि ख्वाजा साहब हम तो नंगी तलवारें होती है ना, हम तो छुप भी नहीं सकते, तो सामने है हमारा. तो एक जो मामला है वो तो बिल्कुल सामने है. तो सेक्सुअलिटी का तो मामला ही नहीं है. So those people who always try to confuse trans right movement with the lesbian and gay movement, they are naive. They need to start reading about gender and sexuality. मैं यही बोलूँगी. ना बड़ा आपने खूबसूरत तरीके से ये एक्सप्लेन किया है कि ये तो वो मूवमेंट ही नहीं है जिसकी ये जिक्र कर रहे होते हैं कि ये आप चाहती हैं कि आपने कभी भी ये नहीं. मैं अब पिछले दिनों सुन रहा था नायाब नायाब अली की, वो कह रही थी कि हमने जो जो ट्रांसजेंडर बिल था पाकिस्तान में जो आया था, उसमें डिमांड्स ये नहीं है कि भाई हमारी क्या सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, हमें कौन सी सेक्स मतलब कि हमारी किस तरफ रोमांटिक लाइफ को जो है वो ऐसा होना चाहिए. उसमें ये था कि राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, ये बेसिक डिमांड्स है जो फंडामेंटल ह्यूमन वो है, राइट्स है. सो तो ये उस चीज को कंफ्यूज कर रहे होते हैं सेक्स के एग्जैक्टली साथ. फैसल. और मैं आपके मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया था. आपने एक साहब की एग्जांपल दी, उनका नाम लेके उनको मजीद बिजनेस नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि पहले ही राइट विंग ने बहुत बिजनेस कमाया है हम ख्वाजा सराओं के नाम पे. पिछले 2-3 साल में जितने यूट्यूब चैनल्स और जितने ये थे, जिनके कोई 100 फॉलोअर्स भी नहीं थे, उनके अब हजारों में फॉलोअर्स आ गए हैं. तो वी हैव गिवन अ लॉट ऑफ बिजनेस टू दीज राइट विंग पीपल. सो आई वॉन्ट नेम देम बिकॉज आई डोंट वांट टू इंक्रीज देयर बिजनेस. तो एक साहब ने कहा कि हमारे माशरे में कहीं ख्वाजा सरा को मैंने देखा अपनी बहन बेटी के साथ तो चीर दूंगा. आप मुझे पहले ये बताएं, एज ए रिसर्चर मैं आपसे सवाल करती हूँ कि व्हाट आर द स्टैटिस्टिक्स. पाकिस्तान में कितने हमारे पास केसेस हैं कि कहीं ख्वाजा सरा ने बस में या वॉशरूम में या पब्लिक हॉस्पिटल में या पब्लिक पार्क में किसी औरत को छेड़ा हो या हरास किया हो. We do not have any single case on record in Pakistan where a trans woman, a Khwaja Sara, has ever harassed a cis woman. We don't have a single case. So आपने कहा कि सोच लिया कि ट्रांस जो हैं वो हरास करेंगे. हाँ, केसेस जो हरासमेंट के हैं, वायलेंस के हैं, वो तो ट्रांस के हैं. In last 5 years, more than 100 transgender persons, transgender women, Khwaja Sara women have been killed, have been murdered in Pakistan. We have huge numbers of acid attacks. We have
thousands of cases of rape cases जो trans women का होता है, who go for functions, who go for the the job, वो जो भीख मांग रही हैं रोड पे, या जो अपनी दो वक्त की रोटी के लिए जो आपकी खुशियों में आके नाच रही हैं, उनको आप रेप करते हैं, उनको आप हरास करते हैं, उनको आप शीशे तोड़ के जमीन के ऊपर उनको आप कहते हैं कि नाचो, वो नंगे पैरों से शीशों पे नाचते हैं. वी हैव several examples, several cases. तो जो वायलेंस और हरासमेंट के केसेस तो ट्रांस के साथ खुद हो रहे हैं. We don't have any single case in Pakistan where any trans woman, any Khwajasara woman has ever harassed another woman. So when we don't have statistics, so as a researcher, as a social scientist, my question is, why do you have this audacity to say that कि मैं चीर दूंगा ट्रांस को, कि मैंने देखा कि मैं कोई बहन बेटी. We don't have statistics. On what basis? Even as a policy maker, we need facts, we need statistics to make policies. So we don't have any statistics, no facts जहाँ पर पाकिस्तान में किसी ख्वाजा सरा ने किसी औरत को हरास किया हो. अच्छा आयशा, जो ट्रांसजेंडर बिल था उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया और जो शरिया कोर्ट ने इंटरवीन किया, लेकिन आप लोगों ने अभी सुप्रीम कोर्ट में उसकी जो है रिट पिटिशन है मेरे ख्याल से, और उसकी हियरिंग स्टार्ट होनी है. सो हाउ आर यू गाइस प्रिपेयर्ड फॉर दैट? जी बिल्कुल. हमने शरीयत कोर्ट में भी आई वाज वन ऑफ द ऑफिशियल पार्टीज, और बहुत सारे ट्रांस एक्टिविस्ट हम उसमें पार्टी थे. जजमेंट उसकी आ गई है, मैं उस जजमेंट पे कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमने उसको इस्तेमाल किया है और हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया है. एंड वी हैव सबमिटेड, वी हैव चैलेंज्ड द जजमेंट ऑफ द शरीयत कोर्ट in the Supreme Court of Pakistan, and now we are waiting for our dates कि hearing की dates आए तो हम अपने इस केस को करें. तो मैं ये भी बताना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि right now the transgender law of 2018 is valid in Pakistan because constitutionally वो अपने spirit में बिल्कुल valid है, and it should be implemented until there is the final judgment from the Supreme Court of Pakistan. वैसे मैं ये आपके थ्रू ये जानना चाहूंगा कि ट्रांसजेंडर बिल, मैंने तो वैसे जो नायाब के थ्रू सुना, तो मैं आपके थ्रू जानना चाहूंगा कि ट्रांसजेंडर बिल में बेसिक है क्या? देखिए, ट्रांसजेंडर राइट्स बिल में बेसिक जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसको चैलेंज किया गया था, दैट इज द राइट ऑफ आइडेंटिफिकेशन. के ख्वाजा सरा जो हैं, जो मैंने बताया कि हमारी जो 3000 years रिच हिस्ट्री है, विजिबिलिटी की, प्रेजेंस की इस खत्ते के अंदर, उसको इज्जत और आइडेंटिफिकेशन देने का सेक्शन है. या ट्रांसजेंडर पर्सन शुड बी गिवन द राइट टू बी आइडेंटिफाइड एज अ ख्वाजा सरा, एज अ ट्रांसजेंडर मैन या ट्रांसजेंडर वुमन. So this law does not allow any man कि वो कल उठकर अपने आप को औरत बना ले या कोई औरत अपने आप को मर्द बना ले. ये एक मिसकंसेप्शन फैलाया गया इस लॉ के हवाले से, और वो then they go about quoting the statistics of नादरा, जो कि एक problematic है. You need to ask नादरा कि जो लोगों ने नेम चेंज, जो जेंडर चेंज कराया है, कितने लोगों का उसके अंदर कोई स्पेलिंग का मसला था. There were many technical issues as well. So I also want to highlight that if any person in Pakistan wants to change his or her gender from male to female or from female to male, they have to go through court or they have to go through the medical procedure. उसके लिए medical board और requirement already मौजूद हैं. But जो transgender law है, वो आपको ये ख्वाजा सराओं को सिर्फ हमें right देता है to identify as ख्वाजा सरा. So this was the whole confusion that was created कि इस लॉ के वजह से या इस लॉ को यूज करके मर्द जो है वो औरतें के आईडी कार्ड ले लेंगे और औरतें जो है वो मर्द के आईडी कार्ड ले लेंगे. मैं अगेन बात करूंगी फैंटेसी की कि कितने मर्द जो हैं वो जाके फीमेल का कार्ड लेंगे, या इवन चले आप कितने मर्द जो हैं वो ख्वाजा का कार्ड लेंगे. We do not have any special benefits if you have a trans ID card. Because we have so much issues with the X ID card. We cannot go. I cannot, like, I have my X gender marker on my passport. I cannot travel to many Arab countries. I cannot enter. तो मेरी mobility as a
फ्री सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड, ये तो मेरी ह्यूमन राइट वायलेशन भी है, इसके ऊपर खैर एक अलग हम कभी शो कर लेंगे. The point is that we are not getting any benefit out of this. It's just the struggle for the identity. और शनाख्त का हक आई थिंक एक बेसिक ह्यूमन राइट है हर इंसान का. और ये पूरी जो जद्दोजहद है, जो पूरी हमारी मूवमेंट है, इट्स जस्ट अबाउट dignity. So the trans law gives us the right to dignity, right to identification. It gives us the right to contest elections. It gives us the right to hold public office. And I'm very happy that many trans women have participated in general elections this year. और 5 साल पहले भी बहुत सारी ख्वाजा सराओं ने अपनी स्पेस क्लेम की और वो सामने आई. आई वुड आल्सो लाइक टू नेम सम ऑफ माय फ्रेंड्स. शहजादी राय हैं कराची में, या नयाब हैं जिन्होंने भी इलेक्शन किया. So I'm very happy to see that we are claiming spaces, और ये जो एक political right है to contest election या to hold public office, ये transgender law के तहत ही possible हुआ है, because the Transgender Act of 2018 gives us the right to work in organization. Because in our society we have faced discrimination. We don't get safe environment in schools. We don't get safe environment in offices. So this law basically is trying to create safe spaces, is trying to create enabling environment for trans people कि वो अपनी तालीम हासिल कर सकें without discrimination and bullying. Just I told you that when I was studying, I faced bullying in school. So I don't want that the next generation of trans women go through the same bullying. So this law basically protects trans children from getting bullied in school, college, and universities, and it also it's the responsibility of the government under this law to create economic opportunities for trans people and to make them the productive citizen of this country. So this is all about the transgender law. आयशा, आप यूके में हैं, सो हैव यू एवर लाइक आपके इस जेंडर की वजह से आपके अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन हुई हो, या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है? बिकॉज आपको बीइंग अ पाकिस्तानी या बीइंग फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वैसे तो डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन आपने हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग? नॉट येट. मतलब मैं यहाँ रहती हूँ, पढ़ रही हूँ, उसके अलावा भी मैं दुनिया में ट्रैवल करती हूँ. हरासमेंट मतलब चैलेंजेस देखे हैं, मैंने जैसे बताया कि ट्रांस के हैं, लेकिन वेस्ट के चैलेंजेस और तरह के हैं कि यहाँ पर अभी इनको नॉन बाइनरी का कॉन्सेप्ट इज न्यू. दैट इज व्हाई वी सी कि वेस्ट में, यूएस में एंड यूके में देयर इज दिस टर्फ मूवमेंट जो एक रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट है या एंटी ट्रांस मूवमेंट है, वो है. पाकिस्तान में उस तरह से वो चैलेंजेस नहीं है, मैं ये कहूंगी. लेकिन पाकिस्तान का अगर इशू हम देखें कि जिस तरह कल्चर को रिस्पेक्ट किया जाता है हमारे रीजन में, पाकिस्तान का इशू ये है कि वहां पर हमें उस तरह की मेन स्ट्रीम प्रोफेशंस में वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती. अदर उसके कंपैरिजन में वेस्ट में, यहाँ यूके में या यूरोप में हम देखते हैं कि मेनी ट्रांस वुमेन आर एजुकेटेड एंड मेनी ट्रांस वुमेन आर ऑन वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस. लाइक जो बेल्जियम की जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, शी इज अ ट्रांस वुमेन. एंड देयर आर मेनी पार्लियामेंटेरियंस जो कि यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसमें भी हैं, यूरोप के अंदर, और इवन इन यूएस बहुत सारी पॉलिटिशियंस हैं ऑन डिफरेंट on different positions. So West में we do see many trans visibility on important positions. पाकिस्तान में अभी वो जो है उस चीज में हम लैक कर रहे हैं. We need to see more trans visibility on important professional positions. लेकिन अगर बात हम मैं कंपैरिजन करूं आइडेंटिटी का, तो पाकिस्तान जो हमारा खिता है उसने हमेशा एक्सेप्ट किया था ख्वाजा सराओं को की आइडेंटिटी को, ख्वाजा सरा कल्चर को. वेस्ट के लिए बड़ी नई बात है. वेस्ट में अभी भी इसीलिए जो एंटी ट्रांस मूवमेंट है वो इसीलिए है कि उनको समझ नहीं आता ये मर्द और औरत के बाहर की बातें उनको समझ नहीं आती, उनको ये नॉन बाइनरी की बातें समझ नहीं आती. तो मैं यही कह रही हूँ कि वेस्ट से अब लोग आके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड से, कैम्ब्रिज से आके पाकिस्तान में पीएचडीज कर रहे हैं ख्वाजा सराओं कल्चर के ऊपर, बिकॉज दे आर लर्निंग फ्रॉम आवर कल्चर. और हमारा जो एक कल्चर है जेंडर डाइवर्सिटी का, उसमें आके लोग पीएचडीज कर रहे हैं, रिसर्चेस कर रहे हैं. और हमें उल्टा कहा जाता है पाकिस्तान में कि हम वेस्टर्न प्रोपेगेंडा लेकर आ रहे हैं, बल्कि आई थिंक वी आर द वन, वी आर टीचिंग द वेस्ट दैट जेंडर जो है वो मर्द औरत
के बाहर भी पॉसिबल है आइडेंटिटी शनाख्त की और भी सरहदें हैं। जैसे बड़ा खूबसूरत वो आरफा सईदा साहिबा कहती हैं कि शनाख्त की और भी सरहदें हैं, हमें हम नीले और गुलाबी खानों की तकसीम से हमें बाहर सोचना चाहिए। सो माई कंट्री माई रीजन हैज सेलिब्रेटेड जेंडर डाइवर्सिटी, और मैं बड़ा प्राउडली यहाँ जब प्रेजेंटेशंस देती हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, तो मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि आई कम फ्रॉम अ वेरी रिच हिस्ट्री ऑफ Pakistani culture, and the West has to learn from us. What do you plan next? Do you plan after doing your PhD, would you like to come to Pakistan? Yes, I would. I mean, make researcher हूँ, activist हूँ, and my aim in life is to uh, help people think out of the box and to think on the basis of facts. तो आई थिंक रिसर्च का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और I and that is the reason I'm doing my PhD, so that I can enhance my knowledge and come back to my country and serve my people and to make them understand that we really need to we need to study gender. और हम जब जेंडर पढ़ेंगे समझेंगे तभी हम राइट्स भी दे सकेंगे। और ये जो हम कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, जेंडर को हम मिक्स कर देते हैं सेक्सुअलिटी से, ये तभी खत्म होगा जब आप रिसर्च करेंगे, और मैं आई थिंक इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आई वुड आल्सो लाइक टू रिक्वेस्ट द राइट विंग मूवमेंट इन पाकिस्तान दैट दे रियली नीड टू give they need to give academic references to their arguments. अगर आप फॉर एग्जांपल अगर ये कहते हैं कि ख्वाजा सराओं को जो है वो कन्वर्जन थेरेपीज देनी चाहिए, इनको मर्द बन के रहना चाहिए, तो आपको प्रूव करने की जरूरत है कि अकेडमिकली क्या पॉसिबिलिटी है कन्वर्जन थेरेपीज की, क्योंकि महज़ब दुनिया के अंदर अब कन्वर्जन थेरेपीज को बैन कर दिया गया है। इट इज कंसिडर्ड टू बी medically it is considered to be an unethical practice, but unfortunately Pakistan के जो right wing movement है, they want कि transgenders की जो है वो conversion therapies करें आप, और ये medically भी और academically भी proven है कि conversion therapies do not work. So I think we need to raise awareness, education, and that is my aim in life. चले आयशा, आई थिंक हमने जो डिस्कशन करनी थी मेरे हिसाब से, अगर इफ यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग एट द एंड। आई थिंक आई वुड जस्ट से कि आपने कोई भी आर्गुमेंट देना है, आई थिंक डिस्कशन करना, डिबेट करना इज अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी, बट दैट डिस्कशन शुड बी assisted with I mean wait ये काट दीजिएगा। हाँ, so I think in the end I would like to say कि डिबेट करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करना, डिसएग्री करना, ये सब एक हेल्दी एक्टिविटीज हैं, बट ये हेल्दी और प्रोडक्टिव तभी होंगी कि जब आप अगले बंदे की बात सुने और रिसर्च बेस्ड एविडेंस के साथ आप अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करें। आप ख्यालों में सोचते हैं कि ट्रांस ने जाके आपको जो है वो हरास कर देना है, दैट इज रॉन्ग। आप स्टेटिस्टिक्स की बात करें, और स्पेशली अगर आपने पाकिस्तान की बात करनी है तो आप पाकिस्तान के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हुए, ख्वाजा सरा कल्चर की रिस्पेक्ट करते हुए बात करें। एंड आई थिंक the most important thing is that we need to have the sense of empathy. We need to be compassionate and we need to understand the problems. We should at least try to understand the problem and the life that transgender persons go through in our country. और आप इतने आराम से अपने कमरों में बैठ के और अपने फैंसी पॉडकास्ट के अंदर आप जो है वो इतने आराम से कह देते हैं कि ट्रांस को हम चीर देंगे और फाड़ देंगे, तो इससे बहुत ज्यादा ट्रांस की जानों को खतरा होता है। तो आई थिंक वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड वी नीड टू बी अ रिस्पॉन्सिबल रिसर्चर एज वेल। थैंक यू सो मच आयशा फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। मैंने बहुत ही कुछ सीखा है आपसे। सो होपफुली जो लोग सुन रहे हैं वो भी इस पॉडकास्ट के थ्रू सीखेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फैसल, थैंक यू सो मच।